Hello everyone, my name is Harsh and a very warm welcome to all of you in this brand new app development course in which we are creating a VPN application in Flutter, and in this video we are going to design the splash screen of our application. So सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ हम कैसी splash screen चाहते हैं. So if I open my existing application you will see टेम्पररी यहाँ पे एक स्प्लैश स्क्रीन आती है जिसमें एक लोगो था एज वेल एज नीचे कुछ मैंने टेक्स्ट लिख के रखा था विथ अ इमोजी. ओके, and I want to design that splash screen. So how we can achieve it in our application? So to create a splash screen I will be creating a separate file because मुझे separate files create करके work करना पसंद है. So for that what I am going to do is inside this screens folder I am going to create a new file simply and name it as splash screen.dat, and I am going to simply hit enter, and after that I am going to import material library here. Okay, so simply material.dat, this flutter material, and simply I am going to write st, and VS Code will provide us two suggestions, mainly stateful widget and stateless widget. So I am creating a stateful widget. The reason is हम इसका init function लगेगा actually, and after that name it as whatever you want. So simply splash screen, and now what we are going to do is we want to show that particular logo, and one another thing उस logo को मैं screen के कुछ इस portion में show कराना चाहता हूँ, which means around 20% of the width from top. Okay, so for doing these dynamic calculations I actually prefer creating a media query object and accessing it throughout the application. So what I generally do is I simply initialize it anywhere. So actually what I am going to do is let's say inside this main.dat मैं उस media query के object को create करने वाला हूँ. So let, and it will be an object of size. Actually हम लोग device की size store करेंगे and I call it generally MQ. And simply I have added a comment here, global object for accessing device screen size. So actually comments डालना एक अच्छी हैबिट है, so आपको भी वो फॉलो करनी चाहिए अगर आप नहीं करते हो then. And after that simply inside this splash screen I am going to use a stack. Okay, so stack helps us positioning widget anywhere we want. So simply stack, and inside it I am going to use positioned widget. And what I am going to do is actually यहाँ पे मैं एक इमेज का यूज़ करूँगा. सो इमेज डॉट असेट्स, एंड उससे पहले वो इमेज मुझे असेट्स में ऐड करनी पड़ेगी. सो सिंपली मैं अपने फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर लेता हूँ, एंड एक्चुअली वी डाउनलोडेड दिस लोगो इन द लास्ट वीडियो. सो सिंपली कॉपी इट एंड सिंपली होम, एंड जहाँ पे भी आपके प्रोजेक्ट की लोकेशन हो सिंपली मूव देयर, and in our case this one basic VPN project, and inside this assets folder this folder is created by me. Okay, so simply I am going to create a new folder here, images, and इसके अंदर मैं images store करूँगा हमारी application की. So simply logo.png, and actually we need to define this folder inside pubsec.yml जैसे मैंने यहाँ पे दो folders किए. So मैं इसे just नीचे copy कर रहा हूँ, and after that मैं यहाँ पे लिखूँगा images. Okay, एंड इससे हम वो इमेज को यूज़ कर पाएंगे. एंड आफ्टर डैट सिंपली हियर हमें पूरा पैथ लिखना पड़ेगा इमेज का. सो असेट स्लैश इमेजेस स्लैश, एंड फाइल का नेम था logo.png. एंड लेट्स से मैं एप्लीकेशन को रन कर लेता हूँ फॉर नाउ, and you will see actually जो directly home screen open होगी. the reason is inside this main.dat हम लोग यहाँ पे actually home screen को open करा रहे. so I will be opening splash screen here. so मुझे इसे import करना पड़ेगा. so simply press control plus dot, and you will see यहाँ पे imports के option है. so actually I prefer these relative imports. okay, if you want you can try this, but ये दिखने में बड़े लगते हैं. relative imports are bit, they say, quicker or bit optimized. so I am going to import it, and home screen की अब हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं. so I can just remove that import, and if I just press control save you will see this something is shown. now what I am going to do is let me just restart the application, and actually यही हमारे splash screen है. you will see it's bit weird. okay, now what we are doing is simply here मैं सबसे पहले ये जो यहाँ पे debug banner इसे false कर देता हूँ. for now debug show checked banner mode, and मैं इसे simply false कर देता हूँ, and simply control save, and you will see that banner is removed. now one more thing, इस tag को actually मैं scaffold से wrap करना चाहूँगा जिससे ऐसा black background ना है. so मैं इसे cut कर लेता हूँ, and simply scaffold, and इसकी जो body होगी वो actually stack होगा. so simply control save, and you will see ये थोड़ा सा optimized लग रहा है.
एंड लेट्स से यहाँ पे मैं एक कॉमा डाल देता हूँ जिससे थोड़ा सा अलाइंड हो जाएगा। नाउ व्हाट आई वांट, ये इमेज इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए, एंड अनदर थिंग ये कहीं पे यहाँ पे लोकेटेड होनी चाहिए सेंटर में। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ मैं इसे विड्थ प्रोवाइड करता हूँ एंड एक्चुअली मैं एम क्यू का यूज़ करूँगा, एम क्यू। सो मुझे जस्ट इसे इंपोर्ट कर लेना चाहिए मेन डॉट डार्ट से, एंड विड्थ। एंड अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लेट्स से 3 लिखता हूँ विच मीन्स 30% ऑफ द स्क्रीन विड्थ, ओके। If you don't mention anything, it simply means full screen width. If I mention something 0.4, 0.3, which means 40%, 30% of the width. But if we press Ctrl Save now, it will throw an error. The reason is हमने सिर्फ एम क्यू के ऑब्जेक्ट को बनाया है, हमने इसे इनिशियलाइज नहीं किया है, एंड वी नीड टू इनिशियलाइज इट। सो वेयर वी आर गोना डू इट, वी कांट डू इट हियर बिकॉज इसे एक मटेरियल ऐप पेरेंट चाहिए। सो वी कैन डू इट इनसाइड दिस स्प्लैश स्क्रीन। सो सिंपली हियर आई एम गोइंग टू डू इट लाइक दिस, एम क्यू इज इक्वल्स टू मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, एंड यहाँ पे हमें एक्चुअली बिल्ड कॉन्टेक्स्ट पास करना पड़ेगा, एंड डॉट साइज, ओके। एंड इफ़ यू वांट, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस भी है, ओके, लाइक पैडिंग एंड ओरिएंटेशन, स्क्रीन की ओरिएंटेशन कौन सी एक्सेट्रा। बट फॉर नाउ आई वांट द डिवाइस साइज, सो सिंपली साइज, एंड नाउ इफ़ आई जस्ट सिंपली प्रेस कंट्रोल सेव, यू विल सी इसकी साइज़ कम हो चुकी है। एंड लेट्स से मुझे इतना छोटा नहीं चाहिए, आई वॉन्ट इट टू बी 40%, एंड अनदर थिंग आई वॉन्ट इट टू बी इन सेंटर। सो एक्चुअली जो पूरी स्क्रीन की विड्थ है वो है 100%, एंड उसमें से 40% इमेज कैप्चर कर रही है। सो अगर मैं लेफ़्ट और राइट से 30% विड्थ या पैडिंग दे देता हूँ तो इमेज ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगी। सो बिट ऑफ मैथमेटिक्स। सो अगर मैं लेफ्ट से एम क्यू डॉट विड्थ एंड यहाँ पे लिखता हूँ 0.3 विच मीन्स 30%, यू विल सी इट इज़ इन सेंटर। नाउ मैं इसे टॉप से भी कुछ विड्थ देना चाहता हूँ, सो सिंपली टॉप एंड एम क्यू डॉट एक्चुअली हाइट, सो हाइट and simply 0.2, and you will see it looks bit better, okay। and another thing, मैं नीचे एक टेक्स्ट भी चाहता हूँ यहाँ पे। so what I'm going to do is simply a text, and let's say for now मैं इसके अंदर कुछ लिख लेता हूँ। so simply made in India with love, and if you wonder मैंने ये इमोजी कहाँ से ली, so I simply searched it on get emojis, so you can go to get emojis and यहाँ से आप कोई भी इमोजी पिक कर सकते हो। let's say I simply search heart here, and you will see यहाँ पे काफ़ी सारे hearts है, okay। so you can just simply click on any one of them, and after that you can just copy it and paste it in our application and it will work। and now if I press Ctrl Save, you will see that made in India is shown on top here, and actually हमने इसे position से wrap नहीं किया इसलिए ये issue है। so simply press Ctrl Shift R to wrap this widget, okay। so wrap with widget and simply positioned, and now what I want is ये bottom में कहीं होना चाहिए। so let it be like this, bottom and mq dot height, I want it to be let's say 0.15, so 15% from bottom, and another thing I want it to be in center। so now let's say यहाँ पे मैं मैथमेटिक्स अप्लाई नहीं करने वाला, मैं यहाँ पे सिंपली टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा। सो टेक्स्ट अलाइन एंड टेक्स्ट अलाइन डॉट सेंटर, एंड इट्स नॉट वर्किंग बिकॉज ये जो पोजीशन है वो सिर्फ उतनी ही विड्थ ले रहा है जितना कंटेंट है। सो आई नीड टू स्पेसिफाई अ विड्थ हियर, सो एम क्यू डॉट विड्थ which means the total width of the screen, and it is in center। now if you want आप इसके font and style को change कर सकते हो, so simply style and text style, and इसका जो color है if you want you can change, so colors dot जो आपको अच्छा लगे, okay। so let's say black 54, थोड़ा सा लाइटर शेड, ओके। एंड अनदर थिंग लेट्स से मैं इसके बीच में थोड़ा सा स्पेसिंग चाहूँ, देन सो व्हाट आई कैन डू इज़ मैं यहाँ पे लेटेस्ट स्पेसिंग का यूज़ कर सकता हूँ, एंड लेट्स से 1.25, ओके। सो लेट्स सी ये काफ़ी ज़्यादा है, ओके। सो लेट्स से इसे 1 की रखूँ तो एंड यू विल सी यहाँ पे स्पेसिंग बढ़ गई। एक्चुअली ये कलर काफ़ी डिम लग रहा है, सो लेट्स से ब्लैक 87, एंड दैट्स ओके। and you can design this screen according to your needs।
एंड वन मोर थिंग, मैंने यहाँ पे कुछ कमेंट्स डाल दिए फॉर रेफरेंस, ओके, एंड यू कैन ऐड अकॉर्डिंग टू योर नीड, जिससे कोड्स थोड़े से रीएडजस्टेड लगे. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ वी वांट कि स्क्रीन कुछ समय के लिए शो हो एंड आफ्टर दैट हम लोग हमारी होम स्क्रीन के अंदर मूव हो जाए. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, यहाँ पे मैं एक्चुअली इनिट स्टेट को ओवरराइड करने वाला हूँ. सो सिंपली इनिट स्टेट, ओके, एंड दिस इज़ द फर्स्ट फंक्शन दैट इज़ कॉल्ड इन लाइफ साइकिल ऑफ दिस स्प्लैश स्क्रीन. ओके, सो इसके अंदर मैं वो कोड लिखूँगा जिससे मैं थोड़ा सा डिले इंट्रोड्यूस करूँगा एंड आफ्टर दैट मैं नेक्स्ट स्क्रीन में मूव करूँगा. ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ सिंपली हियर फ्यूचर डॉट डिले एंड मैं यहाँ पे कुछ ड्यूरेशन दूंगा जितने टाइम के लिए मुझे स्प्लैश स्क्रीन शो करानी है. सो लेट्स से मैं इसे मिली सेकेंड्स में दे सकता हूँ या सेकेंड्स में भी दे सकता हूँ, बट आई एम गोइंग टू प्रीफर मिली सेकेंड्स. एंड यहाँ पे मैं 1500 मिली सेकेंड्स दे रहा हूँ, which means 1.5 second. If you give 2000 which means 2 seconds, okay, and after that simply here मैं यहाँ पे एक function बनाऊँगा. okay, so simply you can use braces like this and simply a semicolon here. now इस function में जो भी हम लोग कोड लिखेंगे वो इतने टाइम के बाद एग्जीक्यूट होगा. okay, you can increase or decrease the duration according to your needs. now what I want, जब ये फंक्शन कंप्लीट हो जाए या टाइम कंप्लीट हो जाए, वांट टू नेविगेट टू होम स्क्रीन. सो सिंपली हियर मैं नेविगेटर का यूज़ कर रहा हूँ. सो नेविगेटर डॉट एंड सिंपली पुश रिप्लेसमेंट. ओके, नाउ व्हाई पुश रिप्लेसमेंट, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि यूज़र स्प्लैश स्क्रीन पे वापस आ सके एक बार होम स्क्रीन में जाने के बाद. सो दैट्स वाई पुश रिप्लेसमेंट. ओके, एंड सिंपली हियर अ रूट. सो मैं मटेरियल पेज रूट्स का यूज़ करता हूँ जनरली. एंड सिंपली बिल्डर के अंदर एक अंडरस्कोर एंड आफ्टर दैट सिंपली लाइक दिस एंड होम स्क्रीन and we need to import this. so simply control dot and import home screen and simply a colon here. okay, control save, and now let's restart the application and you will see it will hold for approx 1.5 millisecond and it will move. if you want you can increase the time. let's say मैं इसे अगर 3 कर दूँ ना, you will see it will be a bit longer time. so if I just do it, and now it is holding it for approx 3.5 seconds and we are navigating. सो एक्चुअली मैं इसे कम ही रखने वाला हूँ. आई डोंट वांट कि यूज़र ज़्यादा देर वेट करे. एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू ऑब्जर्व ना हमारी स्प्लैश स्क्रीन में, देन ये एक्चुअली फुल स्क्रीन में नहीं आ रही. सो एक्चुअली व्हाट आई वांट कि हमारी स्प्लैश स्क्रीन फुल स्क्रीन में होनी चाहिए. एंड अनदर थिंग दैट आई वांट इज़ कि एप्लीकेशन सिर्फ पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में वर्क करनी चाहिए, because we are not designing it for landscape. okay, and अगर ये landscape में जाएगी then it will look bit ugly. so what I am going to do is inside this main मैं यहाँ पे कुछ codes लिखने वाला हूँ. first of all I want it to be moved to full screen. so simply system chrome, so we can use this service system chrome dot and you will see यहाँ पे बहुत सारे options है. okay, so actually we want to change the UI mode. सो दिस सेट अनेबल सिस्टम UI मोड एंड इसके अंदर हम लोग कुछ UI मोड बता सकते हैं. सो देर आर डिफरेंट मोड्स, इमर्सिव स्टिकी और इमर्सिव विच मीन्स फुल स्क्रीन्स and this edge to edge means we want to show the navigation and the bottom stuff. so if you want you can search a bit more about them. for now I am going to use immersive because we are not creating a gaming application, so we prefer immersive sticky. okay, immersive will do our work. एंड आफ्टर दैट मैं चाहता हूँ कि ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट रहे. सो सिंपली सिस्टम क्रोम डॉट प्रीफर्ड ओरिएंटेशन यहाँ पे रहेगा. सो डैट सेट प्रीफर्ड ओरिएंटेशन एंड इसके अंदर हम बता सकते हैं कि हमें कौन सी ओरिएंटेशन चाहिए. सो एक्चुअली एक लिस्ट एक्सपेक्ट करता है हमसे. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दूंगा. सो वो एक्चुअली जो टाइप होगा डिवाइस ओरिएंटेशन का टाइप होगा. सो सिंपली डिवाइस ओरिएंटेशन डॉट पोर्ट्रेट अप as well as device orientation dot portrait down. so मुझे portrait up and down दोनों orientations चलेगी. ओके, एंड एक्चुअली मैं यहाँ पे देन का यूज़ करने वाला हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ जब ओरिएंटेशन सेट हो चुकी हो ना उसके बाद ही एप्लीकेशन एक्चुअली स्टार्ट होनी चाहिए, और एल सम टाइम यू विल सी कि चीज़ें काफ़ी वियर्ड सी हो जाएगी. सो सिंपली देन एंड यहाँ पे सिंपली हमें एक फंक्शन पास करना पड़ेगा जो काइंड ऑफ एक वैल्यू यहाँ पे एक्सपेक्ट करता है. सो सिंपली वी एंड सिंपली लाइक दिस. सो इट विल डू आवर वर्क. नाउ इफ़ आई जस्ट रीस्टार्ट द एप्लीकेशन यू विल सी हमारी जो एप्लीकेशन है वो काइंड ऑफ फुल स्क्रीन में भी होगी एज वेल एज पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन ही उसकी फिक्स रहेगी.
एंड एक्चुअली नथिंग इज़ हैपनिंग. एक्चुअली व्हाट वी डिड इज़ हमने एरर्स इस समय बंद करके रखी है. सो एक्चुअली कोई एरर भी आ रही तो हमें वो दिखा नहीं रहा. सो यू कैन सिंपली ओपन द टर्मिनल एंड क्लिक ऑन दिस डीबग कंसोल एंड यू विल सी यहाँ पे एक्चुअली एक एरर आई है जब मैंने एप्लीकेशन रीस्टार्ट की कि हमने ये अनश्योर नहीं किया है कि ये चीज़ें सेट होने के बाद ये एप्लीकेशन स्टार्ट होनी चाहिए. सो वी नीड टू ओवरराइड दिस विजेट फ्लटर बाइंडिंग स्टफ. सो वी कैन डू इट. ओके, सो सिंपली लाइक यहाँ पे हमें एक फर्स्ट लाइन ऐड करनी पड़ेगी. सो विजेट फ्लटर्स बाइंडिंग डॉट अनश्योर इनिशियलाइज, विच मीन्स जब ये चीज़ें इनिशियलाइज हो जाए उसके बाद ही ऐप रन होनी चाहिए. एंड सिंपली प्रेस कंट्रोल सेव एंड नाउ रीस्टार्ट द एप्लीकेशन एंड यू विल सी एप्लीकेशन फुल स्क्रीन में ओपन हुई है. बट आई डोंट वांट कि मेरी होम स्क्रीन भी फुल स्क्रीन में हो. सो व्हाट आई एम गोना डू इज़ सिंपली इनसाइड दिस फंक्शन जब ये काम हो जाए देन मैं इसका फुल स्क्रीन मोड ऑफ कर दूंगा. सो सिंपली जस्ट कॉपी इट आउट एंड सिंपली हियर इनसाइड दिस वन एंड इसे मैं चेंज कर दूंगा डॉट एंड लेट्स से मैं पहले से इंपोर्ट कर देता हूँ. And after that edge to edge, which means simply move to normal navigation mode. And if I just restart the app now and here it is full screen and वापस home screen पे आने पे वो full screen exit हो जाती है. now सो अगर आप यही सेम फुल स्क्रीन की ट्रिक किसी और प्रोजेक्ट में जस्ट ट्राई करोगे यू विल सी इट इज़ नॉट वर्किंग ऑन सम एंड्रॉयड डिवाइसेस. द रीज़न इज़ एक्चुअली मैंने एंड्रॉयड में एक एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड की है इस प्रोजेक्ट में. ओके, सो सिंपली इनसाइड दिस एसआरसी एंड मेन एंड रिसोर्सेज एंड सिंपली इनसाइड दिस वैल्यूज़ अगर आप स्टाइल्स को ओपन करोगे ना यू विल सी देयर इज़ इन वन code here called as short edges. so this means जो नॉच का एरिया है वो भी हम कवर करें. सो अगर आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट में सेम थिंग ट्राई कर रहे हो देन आपको ये कोड यहाँ पे डालना पड़ेगा. ओके, एंड देन इट विल वर्क. सो दैट्स इट. we created a splash screen for our application as well as we also did that full screen stuff and portrait orientation thing. Okay, and I have added some comments here, so it's always a good practice to add comments. Okay, so that's it for this video. See you in the next video. Till then, bye bye.